Add Astra. Phew! When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. हेलो हेलो। हाँ चलो क्या हाल है? हाँ भैया गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया ही है। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया।
मैं जा रहा हूँ सोने यार। क्यों रात भर सोया नहीं, अब सोने जा रहा हूँ मैं। क्यों सोए क्यों नहीं? क्या? सोए क्यों नहीं? हाँ, अरे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। वो मुझे लगा एमएल खेल रहे होगे। नहीं कुछ। नहीं नहीं, नेटिंग ही था रात भर। नेटी नहीं खराब था मतलब? इंटरनेट नहीं था रात भर। The hunt is on. देखो एयरटेल वाला तो था नहीं रात भर इंटरनेट। अभी अभी आया है आधे घंटे पहले। चलो आता हूँ दोपहर में। बाय बाय। हाँ हाँ with the wind. Yeah! This is a new one. The hunt is on.
Let's dance. This'll pack a punch. Dodge this! What's the hurry? What's the hurry? What's the hurry? Cool it! Ever seen one of these? You're stuck now. Dodge this! I'll protect us. Ad Astra. Thank you for coming. Who would have guessed that rebuilding the Jade Chamber would draw out such a massive monster? Oh, for a second there, Paimon really thought the Jade Chamber was gonna be ruined again! Oh, but it's all over now! Who knows if the Lantern Rite can still go on after an incident like that, though? Let's ask Lady Ningguang how things are shaping up for the festival this year. Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the Lantern Rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the Lantern Rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the Lantern Rite. But with all that has occurred in Liyue as of late,
I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence, something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were K-Seth. originally developed alongside Boy. many other inventions FYI. here in Liyue. Sister When our 19 ancestors first LOL. created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Wow! Everything has so much history in Liyue! As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together?
with the wind. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Jingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Whew. Paimon couldn't get a single word in just now. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the Lantern Rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the Lantern Rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her?
Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Thank you, Traveler. I am glad you were able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Kuching has been working non-stop without a break. Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep, deep down inside? Or maybe... we could ask a friend! You know, someone more knowledgeable about these things. Huh? Zhang Li? Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Paimon thinks he's still a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. Let's go see if he's there. A copy of each invoice is sent to the ministry. Hello. How may I help you? Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at Third Round Knockout. I've heard the director often goes there to do, promotion. Phew! Yum, yum, yum! Ooh, I am so full. Not another bite. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions, then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite.
could have guessed that. Yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhangli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Huh. Don't have to ask Paimon twice, or once even. Huh? You mean we're not gonna try any? Oh, fine. Let's get down to business. We meet again, traveler. I trust your journey is going well? Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultants? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangxiang Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, traveler, what brings you to see me today? Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter, such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Paimon doesn't really get it. I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuheng. You are on amiable terms with the Yuheng, which makes you the natural candidate. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Kuching, right? So who should we start with? Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh! Lady Kuching! Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuheng. It was the least I could do. Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Kuching, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion.
The Adepti may have already forgotten about me, and I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Unfortunately, Ganyu is on leave at the moment, so I'm unable to get in touch with her. I'm afraid I'll still require your assistance. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Chising. Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Huh? Together? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. And there she goes. That's the Yuheng. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Success.
success. Da-da-da-da-da-da-da-da. A toast to our success. Boyer Huff. V.FYI. Made another handsome sum today. Ma-da-da-da. Listen, let me tell you how. Made another handsome sum today. Oh there, come, let's go. Gather round, gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lantern. Shadow Lantern? Ooh, Paimon's never heard of this one before. You two look like you're out to have some fun. Care to check out the Shadow Lantern, my latest invention made to amaze and amuse? It's very simple. All you have to do is rotate the objects inside the Shadow Lantern, get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible images will be revealed before your very eyes. Intrigued? You should try it out for yourself. It's set up right here. Please peruse and use at your leisure. I hope the Shadow Lantern shows you something truly spectacular. Sounds pretty cool. Let's give it a whirl.
Everyone is working super hard. We should be too. Try the shadow lantern. Go, Barbara, go! Huh? Phew, go! Huh? A great many things are still unaccounted for. The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. All the literature, furniture, and ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. Reclaiming them is taxing work. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job, but even then, I just can't tell whether Beto will be able to fish out everything herself. Wait, so you made Beto go and fish your stuff out of the sea for you? To claim that I made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Anyway, Beto is currently in the Guyan Stone Forest area. If you're interested, go pay her a visit. You may be just the help she needs. Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. Oh, Traveler, what are you doing out this way? Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all the help I can get. Hogan? Look, I even had to rope Xinyan into this. क्या हुआ? Yeah, what's the occasion? Did you come all the मैं way out here to do a वॉकिंग performance? 400 रुपीस में दे सकता हूँ, तो बढ़िया है। You bet I did. लेकिन Nothing वो official, mind you. ये बात है They don't want to hold a कि feast ज़्यादा on ऑर्डर्स board. होने I'd से really दे come सकता हूँ, play क्योंकि with एक दो ऑर्डर्स में मेरा ही लॉस हो जाएगा ट्रांजैक्शन फीस में। ओह, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो इजी होगा। तो देखो ये क्या नाम है, रिबर और वो सोमा तो लेते ही हैं, ठीक है। और लॉलियट भी बोल रहा था लेने के लिए। बीटी भी शायद ले लेगा, जरूरी नहीं है बीटी का। मैं देखो शायद ले लूंगा, आज 4 बजे पता चलेगा कि मैं लूंगा कि नहीं। But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ning Wong's secretaries. They called Beto away. I think it was Bai Wen or Bai Xiao. Well, it was Bai something. Anyway, Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old valuables. She seems pretty willing to shell out for it, too. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. So you have your own vessel, do ya? Great, let's take yours then. The more people we have on this job, the better.
because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. भी चाहिए नहीं। हेलो हेलो अवन। हाँ हाँ क्या बोल रहा है? क्रिस्टल्स क्या या क्रिस्टल? नहीं? क्रिस्टल्स लोगों के लिए मुश्किल है लेना। क्रिस्टल्स के लिए वो लेंगे जो वेल होते हैं। So, समझ रहे हो? is it? This is your boat? हेलो? It's really हाँ भाग गया। compact. हाँ समझ। But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water's surface. The only thing is, 399.90. we're packed in like sardines here. I don't know where to put my guitar. Shinyan, your axe is getting a little too... Hold up, are वो those क्रिस्टल treasure? सबसे ज्यादा कितना प्राइस है? We don't usually क्या see these crystals guys out है at sea. Could they be here for the क्रिस्टल्स same का reason मैक्स as us? वो Come on, traveler. कुछ 9,000 के Steer us a little आसपास है। closer. नहीं 8,900 तो है। वही तो बोल रहा हूँ 9,000 के आसपास है। और क्या बोल रहा हूँ? बह रहा है। मैं तुझे 7,500 में दे सकता हूँ। अरे तो मुझे क्या, मैं क्रिस्टल थोड़ी ना लूंगा। हाँ भाई। नहीं चार्ट ले। क्या क्या बोल रहा है? हेलो पवन। हाँ क्या बोल रहा है? Why are Hey, they mate. headed back to shore? चार्ट बनाऊंगा क्रिस्टल्स वर्किंग के लिए। कस्टमर ज्यादा To मिलेंगे reconvene with तो their posse, हो I'll जाएगा। bet. Speed it up a notch, traveler. वॉकिंग This में is a chase now. वॉकिंग या क्या बोल वेल्किन ब्लेसिंग ऑफ द Five. वेल्किन वो नाम है उसका पूरा। 5-6 कस्टमर्स मिल जाएंगे तो हो सकता है क्योंकि थोड़ा तेरा प्रॉफिट। अभी देख रीपर का अभी तो पता नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन रीपर का और सोना का ये है कि वो हर मंथ लेते हैं, ठीक है ना? तो तेरे को जरूरी नहीं कि अभी मिले, लेकिन हो सकता है कि तेरे को मंथ की शुरुआत में या फिर जब भी उनका वेलकम खत्म होने वाला हो तब वो लेंगे। दोनों लोग लेते हैं, ठीक है ना? रीपर बैटल पास भी लेता है साथ में, सिर्फ वो वही नहीं लेता है, ठीक है? बैटल पास बैटल पास वो 900 का पड़ता है। जो रॉयल जो स्टारलाइट टाइप का नहीं है एमएल में, वही बैटल पास है। वो 1.5 महीने में एक बार आता है। तो अभी अपडेट आ जाएगा, 20 दिन में आएगा अपडेट, तब आएगा बैटल पास में यहाँ। तो वो एक तुम्हारा हो जाएगा। रीपर लेता जरूर है, वो हर बार बैटल पास लेता है। और सोमा और रीपर का वेलकिन हमेशा एक्टिव रहता है। लॉलिड भी कह रहा था, मेरा भी देखो शायद हो जाएगा। देखा वो बैटल पास है या नहीं है। इफ वो 60 जेनेसिस क्रिस्टल्स का है, 300 बोनस भी है। हाँ वो 300 तो मिलेगा ही, 300 मिलेगा जेनेसिस क्रिस्टल और बाकी फ्री में मिलेगा They're जब gaining on वेलकिन us. लोगे तो। We can't give them the slip. नहीं Call it Carmen. I mean, वो है ना लाइक क्रिस्टल्स का रेट Treasure hoarder has a name like that? बोनस भी है लाइक One I happen to know 330 जेनेसिस pretty well. क्रिस्टल्स Didn't तुझे think we'd वो be running into him. 350 में मिल जाएगा। Freeze. Ever seen one of these? You're stuck now. Time to go! Dodge this. The hunt is on. Got something for ya. I'll protect us. See? उसको मारना कैसे है भाई? बहुत ज्यादा ही डैमेज ले रहा है मतलब बंदा। ओके, इससे मारना है क्या?
The show begins. This'll pack a punch. ऑलमोस्ट मर गया। What's the hurry? Cool it! This is too tough! Stop! All of you! Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I see. I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Maybe if you did your own dirty work rather than dispatching your minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto. Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more trouble. Of course, of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. So, we'll take our leave now? Wow, he did what we asked without a second thought. Couldn't run off quickly enough either. Don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. But we should load this stash onto the boat first. Come on, Traveler, help me out here. Hey! There's some things floating on the water! हेलो अवेल, Can't quite क्या? make out what they क्या are. बोल रहे हैं? Let's bring them in and take a चार्ट look. बनाना पड़ेगा तो I'll take बना the लो। rudder. Traveler, Xinyan, go reel क्योंकि them in. मुझे वो डिफरेंट सर्वर से खरीदना पड़ता है ना, डिफरेंट कंट्री करेंसीज, उसका भी फी लगता है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे तो भी अच्छा। मेल प्रॉफिट जरा उसी से होगा, क्या नाम है, अगर कोई क्रिस्टल्स बाई करता है Looks तो। like another treasure hoarder raft. लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा में क्रिस्टल्स नहीं, तेरे को एक वेल चाहिए होगा। ये तेरे को वेल मिल गया ना, फिर समझ ले तेरा जितना भी है ना वो सबसे ज्यादा उसी से हो जाएगा। Smart choice. He knows who he's up against. एक बार पे बंदे पता नहीं लाखों खर्च करते हैं भाई। मुझे बस एक वेल ढूंढना है कहीं से। Come on, we gotta wrap this up soon. Leave the junk, take anything and everything of value. And I need a few of you to load the boat up. Move it! Whatever you're about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto? What are you doing here? I might ask you the same question. I mean, what does it look like? We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. Is that right? Well, good. I'll take it all. Come on. Be reasonable here. Me and the guys have been busting a gut gathering all this up. You gotta leave us a little something, surely. Let me make this crystal clear. These things do not belong to you, and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away from me as is physically possible. That's a little, hey, why don't we start over here, huh? You see, Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way.
this? Got something for ya. You're stuck now. Dodge this! I'll protect us. Cool it. What's the hurry? What's the hurry? Right on target. The boat's loaded in the water, boss. Come take a look. Captain Beto pulls no punches. Retreat! Retreat! If the boss is bailing, we'd better bail too. Looks like they're out of here. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. Boy, they sure ran off quickly. Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. In the meantime, Traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang for me. Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. All right. Thanks, Traveler. If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. I've got to tell Sea Drake and the rest of the crew to stay on high alert. With the wind. Huh? Sorry, anything business related is confidential. Huh? Toodaloo. Sorry, anything business related is confidential. Silly churl, Billy churl. Let's dance. Welcome back. I trust Beto is making good progress on salvaging the items. Treasure hoarders. I see. Yes, I can imagine that must have been rather irksome. It sounds like you scared them off on this occasion, but it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. I will be sure to make preparations for her compensation. I also owe you my thanks for coming all this way to deliver Beto's message. Here, please take this as a token of my appreciation. Now, please excuse me. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Girl. मैं वो 60 Genesis crystals
75 रुपीस में दिला सकता हूँ। और 330 P30 है जेनेसिस क्रिस्टल, वो मैं सेम प्राइस 450 रुपीस में दे सकता हूँ। 330 अच्छा 400 कर ले, 400 रुपीस में 330 जेनेसिस क्रिस्टल्स और 1299 में 1090 कुछ काम के लिए क्या फिर से बोल, तू जब भी बोला मेरे को कुछ नहीं समझ दिया, मैं बाहर था, मतलब गया हुआ था। ये कौन आ रहा है? 1000 हाँ हाँ बोलो। अभी इन गेम में 980 क्रिस्टल्स 1299 है ना। 980 क्रिस्टल्स 1299 रुपीस है। तो मैं 1090 क्रिस्टल्स 1299 में दिला सकता हूँ। 1090 क्रिस्टल्स। हाँ अब देखो जिसको क्रिस्टल्स लेने होंगे वो तो ले लेगा, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जिसको क्रिस्टल्स लेने होंगे ना वो ले लेगा। ये बस बात वही है ना कि क्रिस्टल्स लेने वाले कम लोग मिलते हैं। वेल्किन और ये बैटल पास लेने वाले काफी लोग हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मिलती है ना कम में। और ये 2699 रुपीस में इन गेम में 1980 क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन मैं 2240 क्रिस्टल्स दिला सकता हूँ। लेकिन जिसका फर्स्ट रिचार्ज है उसको कितने मिलेंगे? फर्स्ट रिचार्ज का नहीं है यहाँ पे। तो ये अगर फर्स्ट रिचार्ज है ना तो उसको डबल मिलते हैं, तो मतलब फिर उधर फिर प्रॉब्लम जाएगा ना तुमको फिर, क्योंकि बहुत लोगों का फर्स्ट रिचार्ज होगा अभी। लेकिन बहुत लोग का फर्स्ट रिचार्ज नहीं होगा। अब देखो जो भी हो मेरे को नहीं पता भाई। और 3280 क्रिस्टल्स गेम में 4,499 है। तो मैं वो 4,499 से 3,880 क्रिस्टल्स दिला सकता हूँ। 6,480 का है एक जेनेसिस क्रिस्टल्स पैक, 8,900 रुपीस है। वो 8,800 क्रिस्टल्स 8,900 में दिला सकता हूँ। सेम प्राइस लेकिन और क्रिस्टल्स वो ये। और वो वॉक-इन और 330 क्रिस्टल्स वो 400 में दिला सकता हूँ। वेलकिन तो देखो काफी नहीं मिलेंगे, 400 में दिला दोगे तो। क्रिस्टल्स का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे करेंसी एक्सचेंज के लिए बात करना पड़ेगा। This is a new one. Making me angry. Dodge this. Got something for ya.
course, we're doing this. Ever seen one of these? You're stuck now. Freeze! This is a new one. Picked the wrong test subject. चलो रिपेयर। हाँ भाई। हाँ 3-4 घंटे में आ रहा है शायद वो ना। बैनर ये कह रहा था कि ये 400 में बिल्कुल दिला सकता है, लेकिन इसको काफी सारे ऑर्डर रहेंगे तभी इसका फायदा होगा, वरना नहीं होगा। वो तो है ही भाई, इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्योंकि हमें से घाटा हो जाएगा अगर उसमें मतलब कि 400 में दिलाया, और लगी अगर कभी लोगों को तो अगर 5-6 लोग हुए तो भी फायदा हो जाएगा। हाँ एडवर्टाइज करना पड़ेगा भाई, लोग तो बहुत हैं जो वेलकम लेते हैं। हाँ वही तो, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं सब कह रहा था कि जो है जैसे तुम ही लेने वाले जो है, और बाकी अगर हो सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। लॉलियट भी कह रहा था लेने के लिए। हाँ लॉली ले लेगा, मैं ले लूंगा। सोमा भी तो लेता है। सोमा नहीं लेता, सोमा के पास कहाँ से है पैसे भाई। नहीं सोमा गुंजन देता है। अच्छा है ना, गुंजन देता। अरे तो गुंजन उसी से ले लेगा ना, क्या कहते हैं वही उससे ओवन से। हाँ तो वही बात है ना, लेकिन गुंजन आए तब तो। आजकल आई कहाँ गया है? क्योंकि सोमा का लास्ट वेलकिन गुंजन ने ही दिया था सोमा को, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो लेते हैं वेलकिन वगैरह और गिव अवे भी करते हैं वेलकिन का। हाँ तो वो कर सकते हैं और क्या। और ये एक्सकैलिबर भी तो खेलता है, ये क्या नाम है, ये वो भी तो ले सकता है ना। ये अपने बस बात करिए कितने सारे लोग इधर गेशन खेलते हैं, बहुत लोग उसमें लेते होंगे। हाँ ये जेनी खेलती है, मंदार है, ओटाकू है, भाई पता नहीं ये लोग क्या सीन है, f2p हैं कि लेते हैं। ब्लेसिंग ऑफ वेलकिन मून है ना? क्या था वो? वेलकिन नहीं, फुल ब्लेसिंग ऑफ वेलकिन मून या क्या था? ब्लेसिंग ऑफ वेलकिन मून। लेकिन बैटल पास कह रहा है अवेलेबल नहीं है, बैटल पास भी ले सकते थे ना लोग। भाई दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? ठंडा यार बहुत तेज। वो तो है, निकल रही। इवेंट क्या था? इवेंट आज का आज का ऐसा आवाज आती है, पहले की पता नहीं कहाँ चली जाती है। डिस्कॉर्ड ऐप है ना भाई तेरी? हाँ देख, मीडिया शेयर भी देख। डील तो अच्छी है भाई, लेकिन कस्टमर ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं एक दो ऑर्डर्स करने से मेरा ही लॉस है, ज्यादा प्रॉफिट है। तो अरे तो कितने सारे लोग हैं इधर, सबसे बोलना जो है, ये क्या कहते हैं, ये एक्सकैलिबर खेलता है, बीटी खेलता है, ये सब तो गिव अवे भी करते हैं ना। बीटी तो गिव अवे नहीं करता, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं। अभी गुंजन तो लेकिन बाई करता होगा, गुंजन से बात कर ले। क्रिस्टल्स तो मुश्किल इधर कोई लेना जो है, लेकिन वेलकिन वो सब तो ले लेंगे सब भर भर के। वेलकिन का इतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्रिस्टल्स ले लेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। क्रिस्टल्स कोई नहीं लेता ना भाई, उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता किसी का, इसीलिए नहीं लेते ना लोग। लेकिन क्रिस्टल्स ज्यादा है इस ऑफर में, क्रिस्टल्स ज्यादा है, इन गेम से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नहीं लेकिन तुम अगर देखो ये देखो ना, वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद हर सीजन रीसेट होता है वो फर्स्ट रिचार्ज वाला शायद। नहीं अच्छा बस एक ही बार? वो अभी तक एक ही बार हुआ है। एक ही बार रीसेट हुआ है।
नहीं मतलब वो क्या कहते हैं जिसमें डबल मिलता है, फर्स्ट रिचार्ज पे डबल क्रिस्टल्स मिलते हैं वो वाला। हाँ समझ गया भाई। वॉकिंग के लिए तो मुझे मिनिमम 5-6 तो चाहिए। हाँ जेनेसिस क्रिस्टल्स लेने, जेनेसिस क्रिस्टल का 1000 प्लस, तो एक ऑर्डर भी ले सकता हूँ। क्रिस्टल टॉप अप। $75 में, हाँ 19 को तक आएगा, काफी अंतर है। 30 Another test subject. Suffocate. लेकिन ये 1299 वाला तो सेम ही है, 1299 में नहीं हुआ रिड्यूस। 99 इन गेम में भी 90, हाँ 1090 का ही मिल रहा है, 1299 में मतलब 1090 डायमंड से मिल रहा है। 1090 नहीं होगा, 110 डायमंड बोनस अभी मिल रहा है। ये मतलब फर्स्ट टाइम बाय नहीं है तो ये बोनस तो रहेगा ही रहेगा। पहले दो तो ठीक लग रहा है। मैं रिड्यूस कर सकता हूँ प्राइस, फिक्स नहीं है ये, रिड्यूस कर सकता हूँ। लाइक 1000 तो करो ना। क्या करूँ? क्यों करूँ बता रहा है। रिड्यूस कर सकता हूँ लेकिन करेगा नहीं क्या? भी थोड़ा प्रॉफिट तो चाहिए। रास्ते की तरह के बोल थोड़ी ना है। नहीं वो तो ठीक है, पर फिर वो सेम ही प्राइस हो गया ना, 1299 2699, फिर वो इन गेम प्राइस ही हो रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा भी डिफरेंस नहीं रहेगा तो कोई थर्ड पार्टी नहीं लेगा ना वो, तो फिर वो लेजेंड लेना चाहेंगे ना। क्रिस्टल्स ज्यादा है इसलिए सेम रखा है मैंने। अच्छा क्रिस्टल्स कितने देगा? जैसे 1299 है उसमें कितने ज्यादा क्रिस्टल्स हैं? क्या उसमें क्रिस्टल्स कितने ज्यादा हैं? जैसे 1299 वाला नहीं तो क्या इसके जितने गेम दे रहा है उतने ही ये भी दे रहा है, बट क्वांटम ज्यादा है ना उनका, इसलिए वो बोल रहा है कि अभी सेम प्राइस रखो। अभी स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें 980 जेनेसिस क्रिस्टल्स हैं, 1299 980 जेनेसिस क्रिस्टल्स। क्योंकि वो अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं ये 75 रुपीज वाले नहीं ले लूंगा ज्यादा। इसमें ज्यादा एडवांटेज है भाई। ये भी लिमिट रख देगा, पता है क्या? बोलेगा ये इतने ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्या? ये अगर लिमिट रख देगा, बोलेगा ये इतने ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। एक नहीं लिमिट रख देगा कि जैसे तुम जैसे 5 ही बाई कर सकते हो ये 70 वाले, ऐसे टाइप से। वैसे तो गेम में करना तो नहीं चाहिए इसको। नहीं गेम में नहीं है, ये ओवन कर देगा, ये बता रहा हूँ मैं। ये नल्ला आदमी है ना, कर देगा, तो बोलेगा ये इतना ही बाई करो, ज्यादा मत करो। नहीं हो सकता भाई, 75 रुपीज का बहुत लॉस होगा तेरा। वही तो, फिर उसको चेंज कर दे भाई, एडिट कर दे। 75 में बहुत डिफरेंस आ रहा है, 89 से 75, 80 कर दे बल्कि। नहीं ये बोल रहा है कि तेरा लॉस होगा, उसका नहीं होगा लॉस, ये बोल रहा है। तेरा लॉस होगा 60 क्रिस्टल्स मिलेंगे।
मेरा नहीं होगा भाई। देख मैं तो ले। अगर अगर तो वेल्किन क्रिस्टल की में देखेगा जगह देख, मैं 89 के 60 मिल रहे हैं इधर, तो तू कितने में दे रहा है? 75 में दे रहा है ये हाँ 60। तो सही तो है, फिर 14 रुपए कम तो किया तूने, हाँ घाटा क्यों हो रहा है? 30। पागल, क्या कह रहा हूँ घाटा किधर हो रहा है? घाटा क्या? लॉस किधर हो रहा है लाभ? भाई? लॉस लॉस लॉस। लॉस नहीं, उसका लॉस है क्योंकि दे देख 1090 डायमंड्स जेनेसिस क्रिस्टल्स के लिए 60 जेनेसिस क्रिस्टल पैक 17 टाइम्स खरीदना पड़ेगा, तो समझ गए? कौन सा तुम 1980 जेनेसिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं 19 नहीं टाइम्स। नहीं ओवन, इसमें तो मेरा फायदा हो रहा है। जो 1090 वाला है ना, 1090 के हिसाब से 0.9 रुपीज का मेरे को एक अच्छा क्रिस्टल तो पड़ किधर रहा भेजा है, जरा मेरे को ठीक भी है? दिखाओ भाई। किधर भेजा है इसमें? और 75 वाले पैक में मेरे को 0.8 रुपीज का पड़ रहा है। ये सेंड किधर किया है इसने, और सेंड किधर किया है? चलो मुझे मल्टीप्लाई शेयर कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। देख 60 इंटू 18 1090 क्रॉस होगा। अरे 60 रुक इंटू मैं 19 देख लेता तो हूँ। 75 इंटू 19 कर 1350 है। क्या? नहीं भाई ऐसे नहीं करता मैं कैलकुलेट ना, मैं 60/75 करूंगा ना, मेरे को पर क्रिस्टल की वैल्यू पता लग जाएगी ना। क्रिस्टल वैल्यू। हाँ और क्या, देख, पर 18 क्रिस्टल अगर बोनस हो रहा है 18 तो का obvious एक सी क्रिस्टल बात पड़ रहा है। ओवरऑल मेरे नहीं। को फायदा होगा। इधर 75 बाई 60 अगर करेंगे तो 1.25 का एक क्रिस्टल पड़ रहा है, ठीक है? और 1090 करेंगे तो 0.83 का क्रिस्टल पड़ रहा है। हाँ तो सही सही तो पड़ रहा है, मतलब ये फायदा हो रहा है इसका 1299 वाले में। हेलो, हाँ भाई चलो फायदा हो रहा है उसका, मतलब तेरा फायदा होगा कि तू 1299 लेगा तो। 1090 वाला लूंगा तो हाँ देखो, ये बोल रहा है। हाँ भाई देखो 75 वाले में तेरा एक क्रिस्टल 1.25 का पड़ेगा, ठीक ठीक है? और रुको एक मिनट, 1090 1.25 का नहीं पड़ रहा भाई, 0.8 का पड़ रहा है। और 0.8 का उसमें उसमें पड़ रहा है उसमें। किसमें? रुको एक मिनट, अच्छा हाँ मैं 75/60 करना, मैं 60 कर रहा था। हाँ 0.8 का पड़ रहा है। हाँ अरे अरे तेरा तू ज्यादा कर रहा है भाई 1090 वाले में। 1090 हेलो ओवन, 1200 1.1 हेलो ओवन। ठीक है। और ऊपर वाला पैक ओवन, और ऊपर वाले में कितना रहेगा? मान ले अपन 2700 वाला लेते हैं, उसमें कितना डिफरेंस पड़ जाएगा? क्या क्या? अगर 2700 वाला पैक लेते हैं 2700, हाँ तो उसमें मतलब वो कितने का देगा तू? अभी तो इसमें तो तूने 2700 रखा है। 2550 तक लो कर सकता हूँ। 550, हाँ 2550 ऐसा? हाँ। 1.36। देख कैलकुलेशन देख। हाँ नहीं मैं देख लिया। 1.0 बहुत महंगा पड़ता है यार ये क्रिस्टल दल्ला। इसलिए लार्ज पैक लेने से फायदा है। 1.36 जिनका फर्स्ट टाइम बोनस है उनको तो और फायदा होगा भाई, उनको फर्स्ट टाइम बोनस मिल रहा है। फर्स्ट टाइम बोनस, फर्स्ट टाइम बोनस से वो लार्ज पैक खरीदना चाहिए। हाँ उसमें डबल मिल रहा है ना क्रिस्टल, 4500 वाला लिया जा सकता है। पर देखते हैं गानी आ जाएगी तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हेलो
ओवन गानी आ जाएगी। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, हैं? आवाज नहीं आ रही? तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो बहुत कम आ रही है। तूने नॉइस सप्रेशन वगैरह ऑन रखा है? ऑफ कर रही हो जरा। हेलो, नॉइस सप्रेशन एक बार ऑफ कर भाई। हाँ अब थोड़ी ठीक है, फिर बोल। हाँ कह रहा हूँ ओवन, अभी तेरा ये 2240 वाला जो तेरा पैक है 2699 वाला जो है, ये तेरा महंगा पड़ रहा है 1090 से। हाँ 26 क्या? ये जो 2699 में तेरा पैक है ना, ये 1299 वाले से महंगा पड़ रहा है, मतलब वो उसके वाइज पर क्रिस्टल वाइज। तुम लोग को पर क्रिस्टल की लेकिन वो सही है सर, 60 और वो 1090 वाला तो सही है तेरा, लेकिन तेरा ये उसके बाद वाला सही नहीं है। Alexis Schultz. क्रिस्टल की परी क्या हो गया? मैं रिड्यूस कर सकता हूँ प्राइस। ये देख, तेरा जो थर्ड वाला जो है ना, जो तेरा 1299 में लगता है, अगर तू वो बाय करेगा ना तो तेरे समझ ले 2670 तेरा पड़ना चाहिए था, तूने 2690 में तो डाल के रखा है। 2670 पड़ेगा अगर तू 1299 वाला पैक अगर वो पॉसिबल होता 2 पॉइंट में लेना तो, समझ रहा है? 2670 का पड़ेगा उधर, तू 2699 का दे रहा है, तो 20 रुपए और ज्यादा ले रहा है, 30 रुपए। कैसे कैलकुलेट किया है ओवन तूने? हेलो क्या? चलो कैसे कैलकुलेट किया है भाई? गलत हो गया तेरा थर्ड वाला। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ इन गेम का प्राइस यहाँ पे लिखा है। Ever seen one of these? अरे तो लोगों के लिए तो वो छोटा वाला बाइक करने में ज्यादा फायदा होगा ना, तेरे को वो देखना कि तेरे बड़े वाले का तू कर रहा है तो उसमें ज्यादा फायदा हो रहा है लोगों का छोटे वाले से, ये भी तेरे को देखना है ना, तो क्रिस्टल बढ़ाना नहीं ना है। क्योंकि मैं वो वर्किंग 400 में दे रहा हूँ ना, तो 330 क्रिस्टल की मुझे 400 में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रुक मैं टेक्स्ट करता। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि फिर लोगों के लिए वो वाला फायदा है, अगर वो जैसे बल्क में अगर बाई कर रहे हैं ना काफी सारे, तो लोगों के लिए फिर 1299 वाला ज्यादा फायदा रहेगा तेरे 16 वाले से, समझ रहे हैं? ये देख टेक्स्ट किया मैंने। एक मिनट देखना था, मुझे कोई टेक्स्ट नहीं आया तेरा, किस पे तूने किया है? मीडिया शेयर। अच्छा मीडिया शेयर पे टेक्स्ट किया है, मैं मुझे लगा पर्सनल में किया है। पर्सनल में क्यों करूँ? I am giving Valkyrie 400 rupees, so I have to give 330 for 400 rupees. ये क्या है? क्योंकि वेल्किन और ये 330 का प्राइस सेम है। मतलब? प्राइस सेम है, प्राइस गेम में भी ऐसा है ना, 300 क्रिस्टल्स का 400 ना 449, वेल्किन भी 449। अरे तो वो फिर तेरा प्रॉब्लम करेगा ना, क्योंकि लोग फिर वेल्किन ज्यादा लेगा फायदा ना, 30 को तुरंत मिल जाएंगे, वो 30 उसके लिए थोड़ी ना वो चेंज करेंगे, मतलब इतना घाटा। ये तो हटा ही देना बेकार सब ये जो 400 में तेरा पैक है, क्योंकि वो कोई नहीं बाई करने वाला, सब वेल्किन ही ले सकते हैं। तो उस पर रहेगा ना, 330 का पैक भी 400 के दे रहा है।
जिनको इंस्टेंट चाहिए होगा वो तो ले लेंगे। अरे तो देखो, अगर तुम्हें क्रिस्टल चाहिए तो इसमें फायदा है। अगर उसमें देखो तुम जिस दिन लेते हो ना, उस दिन भी तो तुम क्लेम कर सकते हो। अगर तुम जिस दिन लेते हो उस दिन तो तुम क्लेम कर सकते हो ना। हाँ, लेकिन अकेले क्रिस्टल में भी फायदा नहीं, क्योंकि आप वेल्किन ले जाओ 300 क्रिस्टल तो उसके साथ मिलते ही हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, 300 तुमको इंस्टेंट मिलते हैं और तो उस दिन तुम क्लेम कर सकते हो। यार मेरे को 390 तुमको इंस्टेंट मिल गया ना उससे। हाँ, लेकिन वो एक ही बार का ना। मान ले तुझे 600 चाहिए, ठीक है, हाल में, तो तू 2 वेल्किन तो खरीद लेगा, तो तुझे पहले वेल्किन से तो 390 मिल गए, सेकंड में तेरे को सिर्फ 300 ही मिलेगा। लेकिन ये रहेगा कि वो परपेचुअली 2 महीने का वेल्किन मिल गया। तो दोस्तों ये भी रहेगा ना, तेरे को 600 अगर चाहिए था ना, 600 मान ले तेरे को 700 में चाहिए, तो भी तेरे 10 रुपये कमी रहेगी उसमें केवल 700 में देखा जाए तो। हाँ, कम रहेगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ 700 में विशेष कितनी आती है, कुछ नहीं आती। हाँ, तो तेरे को और लेना है, वही मैं बोल रहा हूँ कि बड़े वाले छोटे वाले पैक खरीद लेंगे फिर तो। अब देखो, वही तो मैं बता रहा हूँ यार, बड़े वाले का वैल्यू पर ज्यादा है तो फिर वो छोटे वाला को लेगा क्यों? और पर क्रिस्टल कॉस्ट रहेगा ना भाई। अगर ज्यादा वाले में फायदा मिल रहा है तो लोग ज्यादा वाला लेंगे। वही तो। और ये तरह ये 400 वाला है ना, ये बहुत ज्यादा क्लोज है उसके वेल्किन के, तो मुश्किल है भाई किसी के लिए भी वो लेना। फर्स्ट टाइम बोनस वाले के लिए फायदा है, लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम बोनस वाले के लिए फायदा है, लेकिन ये बता रहा है फर्स्ट टाइम बोनस मिले ना मिले पक्का नहीं है। आज स्टारबक्स ऑर्डर किया जाए भाई। सही है। टाइम कितना है? ऑफर चल रहा है आज और कल, स्टारबक्स में ऑफर चल रहा है 11-20 हो रहा है। 90 रुपए में 190 में डिलीवरी है भाई। लेट्स गो स्टारबक्स। The hunt is on. तो परमिशन भी नहीं मांगता यार, खुद से ओटी भी पढ़ लेता है भाई। परमिशन मांगे रोज तो ऑर्डर करता है, पैसे मांगते ही रहेंगे पूरे टाइम। मैं जोमेटो से नहीं करता ना, स्विगी से करता हूँ। फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए, पर भाई आपको एसएमएस करने की परमिशन तो मांगनी पड़ेगी, थोड़ी अपने आप से पढ़ लो। भाई अरे मैं देख रहा हूँ आज ऑफर कहाँ लग रहा है, मुझे कुछ बताइए। बक्सू से क्या मैसेज है? ऑर्डर एनी टॉल 26 to 27 को यार भाई। अभी कटवा लेता मैं अपना। अभी क्या हो गया? अरे आज नहीं, कल और परसों में है ऑफर। तो कल और परसों कर लेना ऑर्डर। भाई करना पड़ा। चलो भाई, कितना देर में आ रहा है यार नया बैनर? 11:30 हो रहा है, 4 घंटे में आ रहा है। 4 घंटे में नया बैनर। अब नहीं, हैंगआउट्स नहीं कर रहा हूँ यार, हो गया बहुत हैंगआउट्स। मेरे पास तो 10 विशेष के भी है, टोटल 90 विशेष है। 90 विशेष है और 30 विशेष मेरी हो चुकी है, लेकिन टोटल 120 विशेष है मेरे पास। मेरी 36 की बेटी थी और मेरे पास विशेष अभी 45 खरीद सकता हूँ और 4 हैं, मतलब 49 विशेष हैं टोटल। 50 ही मान लो, 50 विशेष। तुम तो गानी लोगे ना? 86। हाँ, गानी लोगे ना? गानियो। हाँ, गानियो। देखो ओवन का पता चलेगा मुझे आज की, ओवन का मैं वेल्किन लूंगा कि नहीं। This realm is 50-50 ना हारूं बस मैं। मेरा भी सेम डर है भाई, 50-50 ना हारे।
क्योंकि फिर 50-50 हार गया मैं, तो फिर मैं तो भाई गानियों के लिए तो 100% पीटी ले जाऊंगा फिर मैं। फिर ओवन आ जाना तू भाई। मैं भी करूंगा डायरेक्ट जेनेसिस क्रिस्टल के लिए क्यों? हाँ मैं डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दूंगा भाई, If you सीधा ever- क्रिस्टल भेज दियो। ये क्या कर रहा है भाई? हिस्ट्री दिखाई नहीं ना मेरे को वेपन की, अब दिखाई इसने। ये वेपन किसी पे कि भाग गया? क्या 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 कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि अगर ये आज हारता है 50-50 तो ये बाई करेगा, पता है, क्रिस्टल की तरह से। क्या हुआ? कुछ नहीं। 54 मेरे अगर 54 की ड्यूटी चल 50-50 रही है। हारता है तो ही बाई करेगा। मैं भी अगर 50-50 हारूंगा ना तो मेरे को भी वो बाई करना फिर वेलकन। नहीं ये समय बता, फिर वो प्रे करने लगे, बोले हारवा दो। हाँ ये तो करेगा ही भाई। यहाँ पे 3:30 बजे आ जाना, फेट डिसाइड होगा इधर, ठीक है भाई? मैं तो खुद से करूंगा विशेष, जब मिल जाएगा तो बताऊंगा क्या मिला। ये सब क्या है भाई? सामने ही करोगे सबके। नए इवेंट्स आ गए क्या? बहुत वो बड़ा सा, बहुत बड़ा इवेंट आया है भाई इस बार। 120 30 उसमें प्राइम भी बहुत मिल रहे हैं भाई। लॉगिन कर ले तू, अब मैं यहाँ हूँ तो ओटीपी नहीं मांग रहा। अच्छा रुको अभी 1 मिनट, मुझे जरा एक चीज देख लेना तो फिर लॉगिन करता। तो कितने 1500 इंटरेस्ट अभी बैठे बैठे इंटरेस्ट हो जाएगा, मजाक में और क्या। मुझे फिर स्ट्रीम बंद करने दो।